In the name of Allah, dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basic class 8th khatra subject social science. Topic chu understanding secularism. Yus es raat pur as pur raat ki secularism kya go. As moklu raat hi chapter parit. Az karo image exercise page number chu 26 kaditu page number. Unit number 2nd. Question number 1st. List the different types of religious practice that you find in your neighborhood. This could be different forms of prayers, worship of different gods, sacred sites, different kinds of religious music and singing, etc. Does this indicate freedom of religious practice? Type and yam religious practice gasa tandis tohi and pik yam such different forms of prayers asa मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ मज़हब के लोग इबादत करा मुख्तलिफ भगवानन हंद मुख्तलिफ मतलब पाक जायन पे तो मुख्तलिफ रिलीजियस म्यूजिक करने या मुख्तलिफ तरीक़ों से मज़हबी तौर गेवने Does this indicate freedom of religious practice? Yicha indicate kara freedom of religious practice. Agar is wucho India's manz major religions yim ch tum ch 8 sanis neighborhoods manz yim ti people ch yim ti look ch tum ch mukhtalif mazhab thawan ta ye ch matlab Hinduism yus ch tum ch पूजा करा मंदिरन मज तो भगवान सन्स इबादत कर इस्लाम ब्या मजहब मुसलमानन हुंद मजहब नमाज पढ़ने या इबादत पढ़ने मस्जिद शरीफों मज क्रिश्चियन ब्या मजहब तो चर्चन मज इबादत कर सिखिज्म ब्या मजहब गुरुद्वारन मज कर तो यह क्लियर इंडिकेट कर कि इंडिया मज यम शख्स अशखास मुख्तलिफ मजहबन सत ताल्लुक थावान यमन नेरान फ्रीडम ऑफ रिलीजन यह लुत्फ तुलान फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो अत सवाल हेको जवाब लिखित इन इंडिया देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन आवर नेबरहुड पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स आर लिविंग following types of religious practices are followed. Number 1. Hinduism, prayer and puja in mandir. Islam, namaz or ibadat in mosque or masjids. Christianity, prayer in churches. Sikhism, ardas and panis ibadat swana ardas ye bech swana kirtan in a gurdwara. Different religious practices clearly indicate that in India all persons enjoy freedom of religion. You was going to question. The question: will the government intervene if some religious groups say that their religion allows them to practice infanticide? Give reasons for your answer. Government cha interfere kara. Yelka religious group when ye कि यह पन रिलीजन इजाज़त दिवान कि भेदभाव करनुक या तीस तिफलानगी हरकत करनुक तो तुह दीव अत रीज़न चूँकि इंडिया इंडिया मज फ्रीडम ऑफ रिलीजन सारे शहरियन दिन यम तो इंडिया मज तो गवर्नमेंटस यह हक तुम कर इंटरफियर मगर तम वक्त ये रिलीजियस ग्रुप वन कि अलाउ आमुद प्रैक्टिस ऑफ इनफेंटिसाइड यानी कि तीस हरकत यम सत भेदभाव खड़ा गम सत बीस मजहबस ठेस वात तिस पे तुम इंटरफियर कर तो ओवरऑल वो इंडिया मज लीगली बैनड कि अगर कुन मजहबस अलाउ यह कर कि प्रैक्टिस ऑफ इनफेंटिसाइड कर तुम तिस कह हरकत कर यम सत बीस मजहबस ठेस वात अत सवाल हेको जवाब लिखित इन इंडिया फ्रीडम ऑफ रिलीजन is given to all the persons residing in India. The government has a right to intervene
If some religious groups say that their religion allows them to practice infanticide in India, it is legally banned. Question number 3. Question number 3 is to complete the following table. Complete the following table. Yet to Karuni complete each objective. Why is this important? Example of violation of this objective. Objectives क्या छ अमिक यह क्या जरूरी तो violation क्या अमन objective हंस गसान. One religious community does not dominate another. Ak religion हेकिन बिकिस religious community dominate करित के. तिकाज यह क्या important? Freedom of religion is essence of secularism. Freedom of religion है सु कत युस असलियत छ secularism. The example violation क्या गसान. Jews of Israel treat Muslims and Christians very badly. Doyam, the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals. State या government हेकन कुन की मजहबस enforce करित के इम निश रकयत के या कंस शख्स हेकन रकयत के freedom of religion निश. यह क्या जरूरी? To maintain separation of religion from state. Sectoral. The state is intervening in religion in order to end untouchability. State हेक interfere करित तेल कि यलि मतलब भेदभाव आइस गसान यह untouchability खत्म करने खतर हेक state या government interfere करित. Members of one religion do not dominate other members of the religion. Like mazhabik member hekan big mazhab kin member dominate करित के तुमन हेकन तुम दबाव त्रुयित के तुमन हेकन तुम बैन लगित के क्या जरूरी freedom of religion based on the principle of equality. इस freedom of religion छु हिंदुस्तानस मज according to constitution इस अत बेस पे आमुत देन अच उसूल equality हुंद उसूल यानी कि ये प्रथ कन शहरीस बराबर हुकूक आमत देन. Practice of untouchability followed in Hinduism. Hinduism मज छु आमुत ये practice of untouchability follow गमत तो ये छु violation हंस मतलब example छु ये अख अत तो यम कर त्रे सवाल यम तुलजो तुय मदार तुलजो तुय नोट कर कापी पे तो तम पत सत याद नीन करित. आज गो युतुय बाकी सवाल करो इस सबस. खुदा हाफिज.